Welcome back to another lecture on Fourier series. Condition for a Fourier expansion. What is the condition? We know f of x, which is equal to half of a naught plus sigma n equal to 1 to infinity an cos nx plus sigma n equal to 1 to infinity bn sin nx, where a naught, an, bn are constants or called Fourier coefficients or Euler's formulae under the interval alpha alpha plus 2 pi. अब कंडीशन डिस्कस करेंगे कि fx कैसा होना चाहिए. नंबर 1, f of x must be a periodic single valued and finite. Fx must be periodic, single valued and finite. Number 2, fx has a finite number of discontinuities. F of x has a finite number of discontinuities. Discontinuities in any one period. Number 3, fx has at the most a finite number of maxima and minima. F of x at most finite number of maxima and minima. These are the simplest conditions of Fourier series expansion. Functions having points of discontinuity. इस केस में फोरियर कोएफिशिएंट्स a नॉट, an एंड bn, इनकी वैल्यूज क्या रहती है अंडर दिस इंटरवल. Let us try to understand here. These are the two perpendicular axes, x and y axis. Let us take a point C. Here is a curve and the curve is this. इस टाइप से आपके पास एक जंप बनता है यहाँ पर. अगर हम एट x इक्वल टू सी देखें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, दैट इज सेम लग रहे हैं. अगर आप y एक्सिस से देखें तो देयर इज ए गैप. इसको हम फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहेंगे. इन डिलीवरिंग द यूलर्स फॉर्मूले a naught, an, bn, it was assumed that fx was continuous. Instead, a function may have a finite number of points of finite discontinuity, that is, its graph may consist of a finite number of different curves given by different equations. Even then, such a function is expressible as a Fourier series. For instance, if in the interval alpha to alpha plus 2 pi fx is defined, let us take f of x is defined phi and psi, function of x. Here is alpha less than x less than c. जब हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे इस इंटरवल में, this is continuous. Another is c less than x less than 2 pi. That is, C is the point of discontinuity. Here is a C point. This is called point of discontinuity. Then the Fourier coefficient becomes a naught
1/पाई अल्फा टू पहले c जाना पड़ेगा, दैट इज 5x dx प्लस उसके बाद c से 2 पाई c2 here is a alpha plus 2 pi, interval is alpha plus 2 pi, alpha plus 2 pi, here is same psi x dx, यहाँ पे psi है. Similarly an that is equals to 1/pi alpha to c 5x cos nx dx plus c2 alpha plus 2 pi 5x cos nx dx. Similarly bn equal to 1/pi alpha to c, here is a psi x sin nx dx plus c2, here is a c2 alpha plus 2 pi psi x sin nx dx. These are the Fourier coefficients in case of finite point of discontinuity. एक ही point है यहाँ पे discontinuity का. Therefore, at x equal to c, f of x may be written as 1/2 f of c minus 0 plus f of c plus 0, because the function at c minus 0 means left-handed limit. When we take, the function becomes distinct from f of c plus 0. At a point of finite discontinuity at x equal to c, there is a finite jump in the graph of function. Both the limit on the left, that is left limit is this f of c minus 0, and the limit on the right, that is right limit is this, exist. Both exist but are different. At such a point, Fourier series gives the value of f of x as the arithmetic mean of these two limits. So that is this. Let's take a question number 1. Find the Fourier series expansion for fx equal to minus pi, where x lies between minus pi to 0, when fx equal to x lies between 0 to pi. यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे 0 एक फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. Hence further reduce that 1/1 square plus 1/3 square plus 1/5 square plus up to so on equal to pi square upon 8. Let us try to find Fourier coefficients. Solution: f of x equal to a0/2 plus sigma n equal to 1 to infinity an cos nx plus sigma n equal to 1 to infinity bn sin nx. Interval is minus pi to plus pi. Here is a interval this. ये इंटरवल कहाँ से आया? हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं. अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई इंटरवल है, और इसमें पुट हमने अल्फा को माइनस पाई पुट कर लिया, तो देन वी विल गेट दिस. तो accordingly the Fourier coefficients becomes a0, that is equals to 1/pi. Integration here is minus pi to plus pi f of x dx. These are the Fourier coefficients. This is a first Fourier coefficient a0, that is equals to this, and this can be written as 1/pi. अब यहाँ पे minus pi to 0 है फर्स्ट. Integration minus pi to 0. Function is minus pi into dx plus here is 0 to pi, 0 to pi. Function is x into dx. Easily solve कर लेंगे इसको. 1/pi. This is constant.
and minus pi is taken out into 1 into dx, that is x. लिमिट्स यहाँ पे लग जाएगी माइनस पाई टू 0, ये ओवरऑल कॉमन है, प्लस here is x square by 2, लिमिट्स आर 0 टू पाई। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, माइनस पाई टू पाई, here is 1 अपॉन पाई, पहले लिख ही लेते हैं इस टाइप से, माइनस पाई अपर लिमिट दैट इज 0 माइनस ऑफ दैट इज प्लस पाई square by 2 minus lower limit that is 0, we will get minus pi square plus pi square by 2 into 1 upon pi, 1 upon pi, इसको अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, that is minus 1 plus 1 by 2, that is minus 2 plus 1, minus 1 by 2, minus 1 by 2 pi square by that is minus pi by 2, minus pi by 2 is a naught. You can write here a naught equals to minus pi by 2. This is the first Fourier coefficient. इसी टाइप से we find an and bn. Let's find an. an equal to 1 upon pi, डायरेक्टली कर लेंगे अब हम, minus pi to 0, here is minus pi cos nx dx plus 0 to pi x cos nx dx, that is equals to 1 upon pi, माइनस पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर किया, cos की इंटीग्रल दैट इज साइन, वी विल गेट माइनस पाई टाइम्स साइन एन एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज एन, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं और लिमिट्स ले लेंगे, माइनस पाई टू 0 प्लस यहाँ पे एक्स एक्स दोनों साइड आ गए, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स बाय टेकिंग आइलेट फॉर्मूला, तो आइलेट से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फर्स्ट को इसको ले लेंगे, सेकंड फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट ओवरऑल x sin nx डिवाइडेड बाय n प्लस cos nx अपॉन n स्क्वायर, हमें ये मिलेगा 0 टू पाई इज द लिमिट्स। अब लिमिट्स को ध्यान से सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन पाई, अपर लिमिट इज 0, तो 0 बन गया सारा, पाई के लिए भी 0 ही हो जाएगा ओवरऑल, दैट इज 0, इट मीन्स ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस पाई इंटू 0 दैट इज 0, प्लस n स्क्वायर, इसको कॉमन किया, 1 अपॉन n स्क्वायर cos n पाई minus 1 upon n square, we find this upper limit minus lower limit, that is equal to 1 upon pi n square cos n pi minus 1, so therefore an equal to 1 upon pi n square cos n pi minus 1, cos n pi minus 1 raised to power n, ये भी लिख सकते हैं, this is Fourier coefficient an. Similarly we find bn, bn equal to 1 upon pi minus pi to 0, here is minus pi sin nx dx plus 0 to pi, here is x sin nx dx. Similarly यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, and minus pi is taken out, integrations of sin that is cos, minus of cos, therefore we will get 1 upon pi cos nx upon n minus pi to 0 plus minus x cos nx upon n plus sin
nx upon n square 0 to pi, upper minus lower, 1 upon pi is taken out, pi upon n, 1 minus cos n pi, minus pi upon n cos n pi, that is equals to 1 upon n, 1 minus 2 cos n pi. So therefore bn equal to, we can write here, bn equals to 1 upon n, 1 minus 2 cos n pi. ये bn निकल गया, ए नॉट भी निकल गया, an भी निकल गया, bn भी निकल गया. अब थोड़ा सा हम इसको 1 2 3 पुट करके b1 b2 b3 की वैल्यू निकाल देते हैं. यहाँ पे भी a1 a2 a3 की वैल्यू निकाल सकते हैं. लेट अस फाइंड बाय टेकिंग n इक्वल टू, by taking n equals to 1 2 3 up to so on. So we find a1 minus 2 upon pi into 1 square, a2 equal to 0, a3 equal to minus 2 upon pi into 3 square, a4 equals to 0, a5 equals to minus 2 upon pi into 5 square, up to so on, etc. Similarly, b1 equal to 3, b2 equal to minus 1 by 2, b3 equal to 1, b4 equal to minus 1 by 4, up to so on, etc. इस टाइप से हम ऑप्शंस को फाइंड करेंगे. ए नॉट भी हमें पता है. तो सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन, fx equal to half of a naught plus sigma n equal to 1 to infinity an cos nx plus sigma n equal to 1 to infinity bn sin nx. थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं इसको. 1 by 2 a naught plus a1 cos x plus a2 cos 2x plus a3 cos 3x plus up to so on, plus b1 sin 1x plus b2 sin 2x plus b3 sin 3x plus up to so on. जो भी ऑप्शन है यहाँ पे a नॉट a2 a1 a2 a3 up to so on, ये सारे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो therefore we will get, therefore we get f of x that is equals to minus pi by 4 minus 2 by pi cos of x plus cos 3x upon 3 square plus cos 5x upon 5 square plus up to so on, plus 3 sin x minus sin 2x upon 2 plus 3 times sin 3x upon 3 minus sin 4x upon 4 plus up to so on. इस टाइप से हम fx फाइंड करते हैं. ये अब एक फर्दर है कि डिड्यूस दैट, वो भी हमने प्रूव करना है. दैट इज बाय पुटिंग x equal to 0. So f of 0 is here, minus pi by 4 minus 2 by pi cos 0, that is 1, plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square plus up to so on infinity. We know f of c equal to half of f of c minus 0 plus f of c plus 0, when c is the point of finite discontinuity. We take arithmetic mean of this. This is left-handed limit, this is right-handed limit. Both limits are distinct. But in this question, here c equal to 0 be the finite point of discontinuity.
be the finite point of discontinuity. So therefore we get f of 0 equal to half of f of 0 minus 0 plus f of 0 plus 0. This is left-handed limit, this is right-handed limit. So now from the question, from the Fourier series expansion, f of x we find minus pi by 4 minus 2 by pi times cos of x plus cos 3x upon 3 square plus cos 5x upon 5 square plus up to so on plus 3 times sin x minus sin 2x upon 2 plus 3 sin 3x upon 3 plus up to so on. So therefore here is f of 0. What is f of 0? F of 0, x equal to 0 minus pi by 4 minus 2 by pi cos 0 plus cos 3 0, that is 0 upon 3 square plus cos 5 0, that is 0 upon 5 square plus up to so on plus 3 sin 0, that is 0 minus sin 0, that is 0 plus 0 up to so on. This is the sine series. We can write in this way. So therefore f of 0 equal to minus pi by 4 minus 2 by pi cos 0 is 1 plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square plus up to infinity. ये सारा 0 हो जाएगा, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है. f0 हमें मिला ये. अब लेफ्ट हैंडेड f0 क्या मिलेगा और राइट क्या मिलेगा, ये भी देखने वाली बात है. फ्रॉम द क्वेश्चन f ऑफ x इक्वल टू minus pi and x. Here minus pi less than x less than 0. Here is 0 less than x less than plus pi. X less than 0 means left-handed limit. Here is a left-handed limit here. F of x equal to minus pi. So it means from here f of 0 minus 0 we get minus pi. Similarly, right-handed limit x greater than 0, that is x. At x equal to 0, that should be 0. So f of 0 plus 0, that should be equals to 0. This is the left and right-handed limit. अब हम यहाँ पे substitute करेंगे. What we get? Here is f of 0, that is equals to this. ये सारा लिखना पड़ेगा हमारे को इस साइड. f of 0 equal to this, which is equal to minus pi by 4 minus 2 by pi into 1 plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square plus up to infinity equal to half of f of 0 minus 0, that is equals to minus pi plus 0 equal to minus pi by 2. We get this. अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं किसी टाइप से. तो दैट इज 1 plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square plus up to so on infinity. ये क्या मिलने वाला है हमें? इसको राइट हैंड साइड में लेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, that is equal to minus pi by 2 plus pi by 4. LCM is 4 minus 2 pi plus 1 pi, that is minus
1π/4 मिलेगा। अब 2/पाई फिर से ऑलरेडी हमारे पास माइनस है, माइनस माइनस इसको प्लस कर लेगा, तो ये क्या बनेगा, π² 8 दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जो डिड्यूस करके हमें मिला फ्रॉम फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी से। Hence for the today's lecture. Thank you so much.